गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया। तो ये टॉपिक आपके गवर्नेंस सेक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सोशल इश्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया नाम की रिपोर्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ की, उन्होंने ये रिपोर्ट निकाली है। और इस रिपोर्ट की कुछ फाइंडिंग्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, तो अब एक्चुअली आपको पता होगा कि 2020 के अगर आंकड़े आ रहे हैं रोड एक्सीडेंट के, तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम जो है लॉकडाउन में थे, तो इसलिए ऑफ कोर्स जो है जो एक्सीडेंट्स होंगे वो भी कम होंगे, डेथ होंगी वो भी कम होंगी। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2020 में ही हमको ये डिक्लाइन देखने को मिला है। पिछले कुछ सालों से, खासकर 2016 से हमारे को ये डिक्लाइन जो है वो देखने को मिला है। तो एक तरह से 2020 के जो आंकड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि 2019 के मुकाबले 2020 में बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है। लगभग 18.46% का जो है वो डिक्लाइन देखने को मिला है। और नंबर ऑफ पर्सन जो किल हुए हैं उसमें ऑलमोस्ट 13% का डिक्लाइन देखने को मिला है। और जो इंजरीज जिन लोगों को हुई है एक्सीडेंट की वजह से, उनको उसमें हमको 23% के आसपास का जो है वो पिछले साल के मुकाबले हमको डिक्लाइन देखने को मिला है। ठीक है, लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 2016 से ही ये डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है कि एक तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, हम जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं उनको कवर कर रहे हैं। फिर जो है हमारी जो है इवन जो सेफ्टी इक्विपमेंट है हमारे व्हीकल्स में, उसको भी लेकर गवर्नमेंट जो है वो सीरियस हो चुकी है। तो हमारे जो है जो आपके रोड एक्सीडेंट्स हैं उससे जो आपकी फर्टेलिटी रेट है उसमें जो है डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, और इवन रोड एक्सीडेंट्स में भी हमको डिक्लाइन देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब इस आंकड़े में ये कहा गया है कि 18 से 60 साल जो आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसी में सबसे ज़्यादा रोड फर्टेलिटी होती है। मतलब 87.4% वो लोग मरते हैं जो वर्किंग एज ग्रुप के हैं। मोस्टली वही जो है वो एक्सीडेंट्स उन्हीं को लोगों का जो है वो इस लेवल का हो जाता है कि उनकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लेवेंडर। तो ये आपका टॉपिक जो है वो साइंस एंड टेक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी सेक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका कमर्शियल यूज़ भी किया जाएगा। तो लेवेंडर जो है उसका ये टॉपिक क्यों न्यूज़ में, क्योंकि यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उन्होंने इंडिया का फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल भादरवा में जो है इनाग्रेट किया है। भादरवा कहाँ पर पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट डोडा ऑफ जम्मू में। ठीक है, तो भादरवा ही जो वो जगह है जहाँ पर इंडिया का जो है पर्पल रेवोल्यूशन जहाँ से स्टार्ट किया गया है। लेवेंडर होता क्या है? तो 47 नोन स्पीशीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ब्लू, वॉयलेट या लिलैक होते हैं ये, और ओकेजनली ये ब्लैकिश पर्पल या येलोइश कलर के होते हैं। ठीक है, ये आपके ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी काम आते हैं और इवन कॉस्मेटिक्स में भी काम आते हैं। तो पर्पल रेवोल्यूशन क्या है? 2016 में गवर्नमेंट ने अरोमा मिशन नाम से जो है लेवेंडर का जो है वो कल्टिवेशन ऑफ लेवेंडर जो है उसका एक मिशन स्टार्ट किया, बट उसका नाम बाद में बदल के उसको पर्पल रेवोल्यूशन या फिर लेवेंडर रेवोल्यूशन कर दिया। ठीक है, तो मिशन का एम ये था कि हम लेवेंडर कल्टिवेशन 1500 हेक्टेयर्स पहुंचा दें अगले 2-3 साल के अंदर, मतलब 2016 से 2019 के बीच में ये कहा गया। तो अब जो है इस अरोमा मिशन का जो सेकंड फेज भी शुरू किया है, अभी रिसेंटली हमने डिस्कस भी किया था इसको लास्ट ईयर आई थिंक। तो अब इसका सेकंड फेज भी जो है वो चल रहा है, और उसके अंदर भी जो है प्लांटिंग मटेरियल से लेके डिस्टिलेशन यूनिट्स तक और ट्रेनिंग भी जो है फार्मर्स को दी जा रही है कि कैसे वो लेवेंडर की जो है एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, सो अब ऑफ कोर्स अरोमा का मिशन फेज 2 भी चल रहा है, और ये एक तरह से फ्लोरिकल्चर मिशन है और इसको अनाउंस किया गया रिसेंटली। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और ये आपका इवन इकोनॉमी सेक्शन में भी, क्योंकि हमारे को जो है कहीं ना कहीं से कनेक्ट होकर आ सकता है टॉपिक, तो ये उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी रिसेंटली आपको पता है एनुअल मीटिंग हुई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम इसका नाम पहले होता था, और इसको 1971 में क्लॉस श्वाब जो इसके फाउंडर है उन्होंने इसको जो है वो शुरू किया था। इसका नाम बाद में 1987 में बदलकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कर दिया गया, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जिसमें डिस्कशंस जो है की जाने लगी कि जिससे हम इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है वो रिजॉल्व कर सकें। ठीक है, तो इस साल का हमारा थीम था वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। ठीक है, तो इससे लास्ट ईयर का जो थीम था वो था द ग्रेट रीसेट। एक नेटवर्किंग इवेंट है जिसमें गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस और अदर स्टेक होल्डर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेट करती है कि कैसे जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं इकट्ठे मिलकर। ठीक है, तो कुछ रिपोर्ट्स हैं इसकी फेमस जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है टाइम टू टाइम ये रिपोर्ट्स को जो है पब्लिश करता रहता है।
ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लर्निंग आउटकम्स इन इंडिया। तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक वर्किंग पेपर जो है वो पब्लिश हुआ है, जिसमें ये बोला गया है कि साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा इंडिया के जीडीपी में डिक्लाइन देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ लर्निंग लॉस फॉर द यंग। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब ये इसके हाईलाइट्स क्या हैं इस रिपोर्ट के, इसमें कहा गया है कि जीडीपी में सबसे ज़्यादा डिक्लाइन साउथ एशिया में इंडिया में देखने को मिलेगा। लगभग 99 बिलियन डॉलर तक का जो है हमको नुकसान देखने को मिलेगा 2030 तक बिकॉज ऑफ लर्निंग लॉसेस जो हमारे यंग के साथ हो रहे हैं। ठीक है, तो क्यों हो रहे हैं? एक तो पैंडेमिक के टाइम पे स्कूल्स जो हैं वो बंद थे, लर्निंग उनकी ठीक से नहीं हो पाई है। तो अब जो ये वाली जनरेशन जो जो शुरुआत ही जिनकी प्राइमरी स्कूलिंग ही जिनकी पैंडेमिक के टाइम पर मतलब लर्निंग फ्रॉम होम से स्टार्ट हुई है, तो उनके फंडामेंटल्स जो है वो उतने स्ट्रांग नहीं होंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो है इकोनॉमी को हिट होगा जब वो थोड़े बड़े होने लगेंगे, जब वो जो है, और ख़ासकर जो आपके कॉलेज गोइंग हैं, जो आपके जो स्किल सीख रहे हैं, तो वो उनको उनको भी बहुत सफ़र हुआ है। तो वो पॉपुलेशन जब वर्किंग एज में आएगी तो उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो हिट होने लगेगी। ठीक है, इवन 2023 में ही कहा गया है कि 10.5 बिलियन डॉलर का इकोनॉमी को डेंट लगेगा इस लर्निंग लॉस की वजह से। ठीक है, तो अब हमारे लिए चैलेंज है कि कैसे हम जो स्टूडेंट्स ने जो लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ थी उनकी जो पिछले 2 साल की, उसको हम कैसे कितनी जल्दी रिकवर कर लें ताकि हम अपने लॉस जो ये 99 बिलियन डॉलर का लॉस कहा जा रहा है उसको हम कम कर सकें। ठीक है, सो एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में भी देखते हैं। 1966 में बनाया गया था बैंक, मनीला में इसका जो है वो हेडक्वार्टर है, फिलीपींस में। इसके मेंबर वही बन सकते हैं जो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक यूएनएसकैप के जो मेंबर्स हैं। और जो है लगभग इसको वर्ल्ड बैंक के ही मॉडल पर बनाया गया है, मतलब जो जिसने जितनी कंट्रीब्यूशन किया है उसके हिसाब से शेयर होल्डिंग का पैटर्न है इसमें। तो जापान ने सबसे ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट किया था, तो इसमें 15.67% जो है शेयर होल्डिंग जो है वो जापान की है। वोटिंग राइट्स भी उसी के हिसाब से हैं। यूएस सेकंड जो है वो सबसे बड़ा इसका शेयर होल्डर है। फोर्थ शेयर होल्डर जो है वो इंडिया है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स। तो अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है वो सेकंड स्टेट बनी है कंट्री में जिसने कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स जो है एक विलेज के रिकॉग्नाइज किए हैं इनसाइड अ नेशनल पार्क। ठीक है, तो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स क्या होता है? तो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स एरिया वो होता है जो कॉमन फॉरेस्ट लैंड है और उसको ट्रेडिशनली जो है एक कम्युनिटी जो है वो प्रोटेक्ट कर रही थी। और हुआ क्या कि समझ लो बाद में वहाँ पर एक नेशनल पार्क बना दिया गया, तो वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट और इवन जो है यूनियन गवर्नमेंट के पास आ गया, तो उनके कम्युनिटी जो राइट्स है वो उससे उनसे छीन जाते हैं। तो उनको ना छीने हम, उनको मतलब एक तरह से कैसे प्रिजर्व करके रखें उन ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ के राइट्स को, उसके लिए हमने फॉरेस्ट एक्ट बनाया। ठीक है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। तो अंडर सेक्शन 3(1) सबसेक्शन 1 ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हमने ये कम्युनिटी राइट्स जो हैं वो इंश्योर किए और उनको जो है ये आज़ादी दी कि वो अपने कम्युनिटी रिसोर्सेज के ऊपर, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर जो है अपने रूल्स जो है वो लगा सकें। ठीक है, ताकि हमारी जो जो उनके राइट्स हैं नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर, निस्तार राइट्स उनके जो हैं कम्युनिटी राइट्स होते हैं उस एरिया में जहाँ पर वो इवन इंडिपेंडेंस से पहले से वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ या वो कम्युनिटीज़ फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ जो हैं फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ वो पहले से ही जो है उस एरिया पे जो है वो कंजर्वेशन कर रही थी, मैनेज कर रही थी। लेकिन बाद में जब गवर्नमेंट जो है ने अलग अलग जो है जब यूनियन गवर्नमेंट बनी, मतलब इंडिया आज़ाद हुआ, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट बनी, फिर उसके बाद जो है अगर ये नेशनल पार्क बना दिया गया तो गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस उनके कम्युनिटी रिसोर्सेज पर ना हो, उसके लिए हमने उनको ये राइट्स दिए हैं। ठीक है, तो ग्राम सभा को एम्पावर किया जाता है कि वो लोकल ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो हैं वो उनको बचा कर रखें और फॉरेस्ट कंजर्वेशन और मैनेजमेंट में विद इन कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स बाउंड्री के अंदर ही जो है ग्राम सभा जो है वो जो है राइट्स उनको दे। ठीक है, सो अब इसका ज़रूरत क्या है, क्यों ज़रूरी है हमको कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स देना? बिकॉज हिस्टोरिक इनजस्टिस हुआ है उनके साथ। वो पहले से ही फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ थी, उसके बाद हमने उनकी जो है उनकी फॉरेस्ट जो है उनके ऊपर हमने एक तरह से गवर्नमेंट जो है कंट्रोल कर लिया, तो उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। तो इसलिए उस इनजस्टिस को जो है अंडू करने के लिए हमने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2008 में लेकर आए थे, 2006 में लेकर आए थे। 2008 में ऑफकोर्स इन्फोर्स हुआ था वो, और उनको वापस उनके राइट्स दिए गए, उनके जो राइट्स थे उस कम्युनिटी एरिया पे, जो कम्युनिटी फॉरेस्ट एरिया पे उनको रिकॉग्नाइज किया गया। उनको कहा गया कि आप इसको यूज़ भी कर सकते हो यहाँ के रिसोर्सेज को, नॉन टिम्बर रिसोर्सेज को खासकर,
और मैनेज कर सकते हो, और अपने जो आप जिस तरह से पहले से आप फॉरेस्ट रिसोर्सेज को आप कंजर्व कर रहे थे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस से, उन्हीं को आप जो है लीगली अब वो कर पाओगे, ठीक है। तो इंटीग्रल रोल हमने उनका रिकॉग्नाइज किया कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स को हम एलियनेट नहीं कर सकते अगर हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात करते हैं तो, ठीक है। सो उसी के लिए जो है कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स जो है वो लाए गए। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेशनल फैसिलिटी फॉर जीन फंक्शन। साइंस एंड टेक के लिए आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल फैसिलिटी फॉर जीन फंक्शन जो है इन हेल्थ एंड डिसीज, उसको जो है रिसेंटली इनॉग्रेट किया है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने। इसको आइसर पुणे में जो है वो एस्टैब्लिश किया गया। इस फैसिलिटी को डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फंड कर रही है। ये एक ऐसा सेंटर होगा जहाँ पर एनिमल मॉडल्स जो है वो इन हाउस बनाए जाएंगे। आपको पता है ना कि हम जब रिसर्च करते हैं, जीन्स के ऊपर रिसर्च करते हैं, समझ लो एक एनिमल से दूसरे एनिमल में हमने ट्रांसफ़र ऑफ जीन करना है फॉर रिसर्च पर्पस के लिए, तो उसके लिए हमको ये एक सेंटर की ज़रूरत है जहाँ पर ये जीन फंक्शन की रिसर्च की जा सके। तो यही जो है वो जो है फैसिलिटी बनाई गई है। इंपॉर्टेंस क्यों है इसकी? क्योंकि आपको पता है जूनोटिक डिसीज़ बर्डन जो है ह्यूमन हेल्थ पर वो बढ़ता जा रहा है। आप सिर्फ कोरोना ही नहीं है, मंकी पॉक्स ले लो, आप चाहे कोई भी बीमारी ले लो, मोस्टली वो आपके ह्यूमन हेल्थ को जो है एनिमल के थ्रू ही ट्रांसफ़र होकर हमारे ह्यूमन हेल्थ को वो जो है वो नुकसान पहुंचा रही है। तो इसलिए हमें ऐसे रिसर्च फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है जो कि डिसीज़ के ऊपर स्टडीज़ कर सकें और फिजियोलॉजिकल एविडेंस और मेथड्स डेवलप कर सके कि हम जो है इन डिसीज़ से एक स्टेप अहेड कैसे रहेंगे, ठीक है। तो अभी होता क्या था कि हमारे पास जो है फैसिलिटी ऐसी नहीं थी कोई डेडिकेटेड, तो हमें इम्पोर्ट करना पड़ता था ऐसे एनिमल मॉडल्स को, और जो कि जैसे समझ लो कि यूएस से या बड़ी जो डेवलप्ड कंट्रीज से हमें एनिमल मॉडल्स को जो है इंपोर्ट करना पड़ता था, जिसके ऊपर हम जीन फंक्शन की रिसर्च करते थे। तो उसमें कई बार बहुत टाइम लग जाता था, प्रोसेस भी बड़ा कम्बरसम था। अब हमने उसको जब इंडिया में ही बना लिया है तो हमारे पास जो है टाइम भी सेव होगा, रिसोर्सेज भी सेव होंगे, और हम अपने हिसाब से वो रिसर्च कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए ये नेशनल फैसिलिटी फॉर जीन फंक्शन बनाई गई है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is road accidents in India. So recently this report, this topic is important for your governance and even for your social issues. So this report has been prepared by the Transport Research Wing of Ministry of Road Transport and Highways, and this report is highlighting the road accidents which occurred in India during 2020. Okay, so as you know that during 2020 we were in the lockdown phase. So of course there was to be a significant decline in 2020 in terms of road accidents, but it as compared to 2019. But it is not that just because of lockdown we have seen this decline. Rather, since 2016 we have been seeing that road accidents are consistently on decline because we have improved infrastructure in the country now. The Ministry of Road Transport and Highways is proactively involving the automobile manufacturers and conducting awareness about the traffic rules in the country. So we have seen that even black spots where most of the road accidents occur, they have been mostly eliminated in most of the states. And we have seen that these railway passes, they have been made safe. So basically these areas we have made a comprehensive intervention to prevent road accidents in India. So that's why we are seeing we are bearing the fruit of these initiatives. That's why since 2016 we have seen a decline in road accidents in the country. Okay, so as per this 2020 report, total accidents decreased by almost 18.46% as compared to 2019. Number of persons who were killed in accidents also decreased by almost 13%, and number of persons who sustained injury because of a road accident also decreased by almost 23%. So almost we have seen a wide decline in terms of road accidents and the injuries and fatality rate because of which is a consequence of these road accidents. Okay, and there is also another statistic that has been shared in this report, that most of the people who die because of a road accident belong to the working age group of 18 to 60 years. So almost 87.4% of total road accident fatalities occur within the working age group of
18 to 60 years. Okay, so that is a cause of concern. We have to preserve our demographic dividend. If we have to prevent our demography in case we want to convert it into demographic dividend. We have to focus upon declining these road fatalities also, because we are losing a lot of human resources in these road accidents. Okay, so the next topic is lavender. So this topic is important for your economy as well as science and tech section. So the Union Minister of Science and Technology has recently inaugurated India's first lavender festival in Bhadarwa. So Bhadarwa is basically an area in Doda district of Jammu, and this Bhadarwa is also the birthplace of India's Purple Revolution. So Purple Revolution is related to lavender. So lavender is a group of flowering plants. They are either blue, violet, or lilac. They are occasionally blackish purple or yellowish. So apart from use in cosmetics, they are also used in traditional medicines. Okay. So what is the Purple Revolution? So in 2016, the government of India launched this aroma mission, and the aim was to boost the cultivation of plants like lavender, which have aromatic medicinal properties. So the mission initially aimed at increasing lavender cultivation to 1500 hectares within 3 years, and it was named as the Purple Revolution or the Lavender Revolution. And now after the 3-year phase has been completed, now we have recently entered into the second phase of this aroma mission, and under this mission we are providing planting material, distillation units, and even farmers are being trained so that how they can extract this lavender safely. Okay, so the next topic is World Economic Forum. So topic is important for your international relations section. So World Economic Forum annual meeting has come to an end recently. It was the first in-person leadership event since the start of the pandemic. So what is World Economic Forum? Of course, it was formerly known as the European Management Forum. It was founded by the German engineer, namely Klaus Schwab, in the year 1971. But later on, in 1987, it was renamed to World Economic Forum, and it became a platform for resolving international conflicts. Okay, so this year the theme was working together, restoring trust. I think the last year theme was the Great Reset, and this is basically a networking event where countries, the governments, business people, other stakeholders, they get together and they participate in this networking event. So World Economic Forum is also very famous for releasing such comprehensive reports like the Global Competitiveness Report, the Global Risks Report, and even the Global Gender Gap Report. Okay, so the next topic is learning outcomes in India. So the Asian Development Bank has released a new working paper which is highlighting that India will suffer the highest decline in South Asia in terms of GDP because of learning losses for the young. Okay, so this report is saying that almost $10.5 billion dent would be made to India's GDP in 2023 because of learning losses that have been occurring since the last 1 or 2 years. Okay, and if we do not recover, we do not reverse this trend, or we fail to recover the lost opportunities for the students, this dent could increase to $99 billion of GDP by the year 2030 for India. Okay, so this is the challenge, because you know that during COVID-19 lockdown, the students have suffered learning outcomes, especially those who have just entered into the learning phase. Their foundational learning is suffering. Those who were getting skilled, or those who were in the college phase or higher education phase, they have also suffered because of that. So these lost opportunities need to be recovered if we do not want it to damage our GDP. Okay, so what is this Asian Development Bank? Of course, it is headquartered in Manila. It was founded in 1966. Bank only admits the members of UNSCAP, and it is modeled closely on the World Bank model. And like in World Bank, the voting system is based upon the level by which the member country has contributed its shareholding into that bank. So Japan has been the highest shareholder of this Asian Development Bank. That's why it is holding the maximum voting percentage. United States holds the second rank, and India holds the fourth rank in Asian Development Bank.
Okay, so the next topic is community forest rights. So this topic is important for your social issues as well as your environment section. So Chhattisgarh government has become the second state in the country to recognize community forest resource rights of a village inside a national park. So what is a community forest resource? So basically these are common forest lands which have been traditionally protected and conserved for sustainable use by a particular community. But let's say because of after independence, the government of India established its jurisdiction, the state governments were established, then the local governments were established. So these forests basically came under one form or the other, under the one form or the other form of the government. Okay, so what happened because of that? We had certain acts which prohibited the use of which prohibited these local communities from exercising their rights over these community forest resources and common forest lands. So to undo this injustice to these traditional communities, we passed this Forest Rights Act in 2006. Of course, it was enforced in 2008, and under Section 3, subsection 1 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Act, that is the Forest Rights Act, we recognize the right of these particular forest communities to protect, regenerate, or conserve and manage the community forest resources which they were holding which they were holding for centuries. Okay, so community rights were recognized under this act, and even their rights over non-timber forest products were recognized. So Gram Sabha was given the authority to adopt local traditional practices of forest conservation and management within the community forest resource boundary. Okay, so why this recognition of community forest rights was important? Because we did some injustice, or historic injustice was meted out to them, because these forest dependent communities were forced out of their traditional lands. So to undo that injustice, we introduced this Forest Rights Act, and it came into force in 2008. Okay, so they were given the legal right over their community, or legal community right to use, manage, and conserve forest resources. And it was also recognized that they have an integral role to play in the sustainability of forests and in the conservation of biodiversity. Okay, so the next topic is National Facility for Gene Function. This topic is important for your science and tech section. So National Facility for Gene Function in Health and Disease is recently inaugurated by Union Minister of Education in Pune. So this facility has been established at ICER Pune, and it is funded by the Department of Biotechnology. So it will be the primary center where transgenic animal models will be made in-house. Okay, so what are these transgenic animal models? So generally, when you research upon animals, let's say you are researching a drug, so you have to transfer some genes within the animals, or even from animal to even other species. So these genetic engineering methods are applied for transgenic research. So for that, this national facility has been made. Okay, so why is it needed? Because you know that there is a growing zoonotic disease burden on human health, not just COVID, but other diseases have also emerged. We have seen monkeypox recently. There are also several other diseases which have been transferring from animals to humans. So to combat that situation, we need to go for extensive research on animals, so that we can make our interventions based upon physiological evidence and methods. Okay, so what was happening till now is that the Indian researchers were dependent on foreign sources for animal research. Now they will have this facility at home in Pune, and they will be able to, this made in-house facility will allow saving of time and resources, and they would be able to do research at their at Pune only. Okay, so that's why this facility is important, and this is a state-of-the-art facility which has been given by the government to the local researchers. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.